Hey guys, welcome to another lecture from Introductory Statistics. Today I will be talking about the concept of permutation combinations. In the previous lecture, we started with the technique of counting. So you must have realized that this is what we are moving towards. In order to understand probability questions, work out probability properly, you definitely require a deep knowledge of counting techniques. Permutation combination is the formal name for it. अब होता क्या है यहाँ पर वो समझते हैं. कंसिडर अ ग्रुप ऑफ n distinct individuals or objects. How many ways are there to select a subset of size k from this group? So you want to select, k individuals or objects out of a group of, say, n distinct objects. When we say distinct, मतलब कोई कैरेक्टरिस्टिक है, या तो इंडिविजुअल्स हैं तो ऑफ कोर्स ईच इंडिविजुअल इज डिस्टिंक्ट. अगर ऑब्जेक्ट्स है तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक है या फिर दिया हुआ है कि कंसिडर ईच ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एज डिफरेंट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट. अब इसको समझते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू. तो सपोज करते हैं वी हैव baseball scenario and we say we have 15 players with us and now we need to select 9 to form a starting lineup. ठीक है. इसी तरीके से ऐसा भी हो सकता है दैट you have a shop which is selling laptops, and this shop particularly on a particular day has 10 laptops which could be sold, but display में लगाने के लिए there are just 3 positions. So the shopkeeper needs to select 3 out of the 10 laptops he's got to display. Okay, in how many ways can this be done? Can these 3 be chosen? Before we actually calculate the number, ये जो मैंने एग्जाम्पल आपको दिया है, ये जो सिलेक्शन का पूरा सिनेरियो है, हियर यू गेट 2 डिफरेंट केसेस. देयर इज वन केस where order of your selection will matter, and there is one case where the order of selection will not matter. अब ऐसा कहां पे मैं ये चीज अप्लाई कर सकती हूँ उसको समझो. ऑर्डर मैटर कर सकता है. ऑर्डर मैटर करने का मतलब क्या है? सपोज ए एंड बी आर 2 इंडिविजुअल्स दैट यू आर सिलेक्टिंग. ए बी सिलेक्ट हुआ है या बी ए सिलेक्ट हुआ है, इन दोनों चीजों को अगर मैं सेपरेटली ले रही हूं, दैट मीन्स ऑर्डर मैटर्स. बट अगर मैं एज अ ग्रुप कह रही हूं ए बी हैज बीन सिलेक्टेड एज अ ग्रुप, ए बी हैज बीन सिलेक्टेड, मतलब ऑर्डर मैटर नहीं करता है. whether I'm writing down A B or B A, it doesn't matter. तो वहां पर ऑर्डर मैटर नहीं करता. दैट्स द थिंग. ओके. अब बेसबॉल का जो एग्जांपल था, सपोज ए एंड बी आर 2 प्लेयर्स. ओके, Angelina and Bill are 2 players. Now in a baseball scenario, you have pitchers, you have catcher. Okay, so A has been selected as a pitcher, B has been selected as a catcher, is a different case from the case where B has been selected as a pitcher and A has been selected as a catcher. तो यहां पर आपको क्या लग रहा है? यहां पर क्लियरली order should matter, no? Order matters. In this scenario, order matters. But on the other hand, जो हमारा लैपटॉप वाला केस था, उसमें आपको क्या फर्क पड़ रहा है? डिस्प्ले में कौन सा लैपटॉप लग रहा है? यू हैव टू सेल ऑल 10. यू वांट टू सेल ऑल 10. डिस्प्ले में आपको 3 लैपटॉप लगाने हैं. सो any 3 of the 10 could be selected for the display. Sometimes, one is just interested only in which individual or object are selected, but I'm not interested in the order. Order will not matter. Laptop wale case mein order does not matter. Let's now associate the terminology permutation and combination to the entire scenario that we have just kept in front of you. When order matters, जो ये procedure है, इसको हम permutation कहते हैं. Permutation is the vocabulary that you will associate when order matters. Same चीज हो रही है and order matter नहीं कर रहा. The laptop case, उसको हम कहते हैं combination. So permutations, combination
क्या फर्क है? एक में ऑर्डर मैटर करता है, दैट्स परम्यूटेशन, एंड एक में ऑर्डर मैटर नहीं करता, दैट्स combinations. Another word for permutation that you can keep in your mind is arrangement. Why? Because arrangement is something जिसमें matter करता है ना, A, B, C, C, A, B are two different arrangements of the letters A, B, C, right? And you can have even more such arrangements. So permutations is same as saying arrangement. On the other hand, combination is something which is related to pure selection, where order does not matter. In your mind, you can keep that when I'm saying just selection here for combination, that means order does not matter. Selection word तो हमने यहाँ पर भी use किया था कि we are selecting 9 players out of 15 players, right? But because there will be a distinction in every case, right? So when I'm creating that kind of a scenario, order should matter, okay? तो वो permutation से related selection हो गया because order matters. So selection without, order would be combination. Kindly write down. Normally speaking, an ordered subset in this scenario is called a permutation. The number of permutations of size k that can be formed from n individuals or objects in a group will be denoted as, you can denote it as npk, or actually it is also denoted in a lot of books like this, pkn. Similarly, for combination, an unordered subset in again this scenario is called a combination. The number of combinations of size k from n objects or individual is denoted as nck. Also, there's this notation c, kn, and also sometimes like this bracket. So basically C is not written, NK. That basically means in a lot of books with probability, based on probability, you will find this written as N choose K. That's what it means. अब इन दोनों scenarios को एक example के साथ समझते हैं. Suppose a college of commerce has 7 departments and which we denote by say A, B, C, D, E, F and G. ठीक है, ये 7 departments हैं. अब मान लीजिए each department has one representative on the college student council. Okay, each department. From these 7 representatives, you will have to choose a president, a vice president, and a general secretary. Okay, so from these 7, we got to choose president, one vice president, and third general secretary. In how many ways can this be selected? अब इसमें आप खुद से सोचिए, सिलेक्शन का केस है, लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या मैटर करेगा कौन क्या बन रहा है, कौन प्रेसिडेंट के लिए सिलेक्ट हुआ है, कौन वाइस प्रेसिडेंट के लिए सिलेक्ट हुआ है, कौन जनरल सेक्रेटरी के लिए सिलेक्ट हुआ है, या मैटर नहीं करेगा? डेफिनेटली मैटर करेगा यहाँ पर, राइट? तो मुझे कोई वर्ड परम्यूटेशन यहाँ लिखा नहीं दिख रहा है, लेकिन यहां पर जब मैं बोल रही हूं कि आपको सिलेक्ट करना है 3 ऑफिसर्स आउट ऑफ 7 रिप्रेजेंटेटिव्स, देन you will have to think on your own that suppose करिए कि A, B, G have been selected. ठीक है, ये सिलेक्ट हो रहे हैं. तो एक बात बताइए, अगर मैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड जनरल सेक्रेटरी, लेट मी पुट इट एज S, अगर मैं इस तरीके से अपने सारे के सारे आउटकम्स को व्यू करूं, देन A, B, G means A is the president, B is the vice president, and G is the general secretary. On the other hand, if I observe it as BAG, that would mean that B is the president, A is the vice president, G is the secretary, and so on and so forth. तो यहां से हमें क्या समझ आया? पहली चीज तो समझ आई है कि यहाँ पे परम्यूटेशन मैटर करेगा. Now related to the concept of counting that we have done in the previous lecture. इसका मतलब out of the 7 representatives, I have to create all possible
3 tuples, right? That will be my total number of cases. That will be my total number of cases. अब इसको कैसे निकालेंगे? We have already done the multiplication rule, remember? So how many choices do I have for president? For president, I have 7 choices, right? Now for the vice president, one person out of the 7 is already a president. No matter who that person is, I'll be left with 6 people who work as an option for vice president, who could be vice president, right? So कहने का मतलब है, मान लीजिए अगर A president हो गया, तो अब आपके पास 6 options है ना for the vice president. So 6 branches you will have. Similarly, मान लीजिए B is the president, then again you have 6 branches because there will be 6 people left. Again you will have 6 branches. ऐसे ही करके हर केस के साथ आएगा. तो हर केस को हम ऐड कर देंगे. कितने केस है? 7 cases है ना. लेकिन we don't have to stop only for till vice president. We have to also select a secretary. अब मान लीजिए यहाँ पर आपके पास G आ गया. तो अब आपके पास how many choices do you have for the secretary? You have 5. So each of those branches will have next 5 branches. So that means you will have to multiply for the secretary position. You have 5 options, in other words. So 7 into 6 into 5. These are the total number of cases that you have, and these are your ordered cases. In other words, you can also call this 7P3, which is equal to 7 into 6 into 5, which is 210. 7 into 30, 210. So 210 ordered cases you can get from here. These are the number of ways in which you can arrange as president, vice president, general secretary, 3 people who have been chosen out of 7. तो ये अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, समझिएगा इसको ध्यान से. अब इसको हम फैक्टोरियल से रिलेट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं उसको भी समझिए. सो if you have n factorial is n into n minus 1 into n minus 2, so on and so forth. लास्ट में 3 into 2 into 1 तक जाते हैं, राइट. अब मान लीजिए यहाँ पे I want to create factorial. So suppose you have 7 into 6 into 5. In order to create factorial, I have to reach till 1. तो मुझे क्या करना होगा? मुझे मल्टीप्लाई करना होगा 4 into 3 into 2 into 1 से, right? Now if I'm multiplying by something, so I also have to divide by that, right? I also have to divide by that. अच्छा, अब मुझे बताइए कि यहाँ पर 4 into 3 into 2 into 1 जो है, इसको कैसे रिलेट करोगे 7 से? इसको सोचिएगा. तो यहाँ what you will notice is कि आपने क्या किया है? आपने बेसिकली 7 into 6 into 5 into 4 factorial कर दिया and divided by 4 factorial, which makes your numerator 7 factorial divided by 4 factorial. अब 7 और 4 का क्या रिलेशन है? 7 और 4 का रिलेशन है कि if I subtract 3 from 7, I'm gonna get 4. So 4 is basically equal to 7 minus 3. अब मैंने 3 क्यों चूज किया? क्योंकि 3 मेरे पास यहाँ पिक्चर में है ना. Actually, we were permuting 3 out of 7, right? So that's the relation. So whenever you have n, p, k, you can use the formula of factorials as n factorial 7p3, right? So n factorial upon n minus k factorial. इस एग्जाम्पल से आई थिंक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा. ठीक है. अब इसी सिनेरियो में थोड़ा सा चेंज करते हैं. Now this time in the same example, ये काउंसिल वाला जो एग्जाम्पल है, suppose that 3 of the 7 representatives are to be selected just to attend a statewide convention.
Now do you think the order will matter? सी प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटरी के लिए तो ऑर्डर मैटर करता है, राइट? ए बना है, ए क्या बना है, बी क्या बना है, जी क्या बना है. बट नाउ आई जस्ट हैव टू सेंड देम टू सम फंक्शन, some convention. It doesn't matter who goes, in which order. It matters who goes, but it doesn't matter in which order you're selecting. So this time order of selection is really not important. And therefore, here you will be using just a selection, or in other words, out of the 7 people, you have to just select, or in other words, combination use करना है, 7 choose 3 करना है आपको. अब इसमें सोचते हैं कि ये नंबर आएगा कैसे. चलिए, अब हमने इसका परम्यूटेशन तो निकाल ही लिया था भाई, राइट? वी हैड कैलकुलेटेड द परम्यूटेशन एंड 210 केसेस आ रहे थे. But their order matter कर रहा था, right? These 210 cases include cases like suppose A, G, B are selected. Now A, G, B in 210, you just don't have A, G, B. You have all arrangements of A, G, B. आपके पास A, G, B भी है, A, B, G भी है, it's separate case है, G, B, A भी है, G, A, B भी है. And you also have B, A, G and B, G, A, which means I have just for one A, G, B, I have 6 forms of that. I have 6 permutations, in other words, of just A, G, B. एक की जगह 6 हैं, राइट? क्योंकि ऑर्डर मैटर कर रहा था, तो हमारे को देखना था, ऑर्डर मैटर कर रहा था, राइट? इसी तरीके से अगर मैं ACG ले लूं, सपोज ACG इज सिलेक्टेड, उसके भी 6 केसेस हैं. इसी तरीके से मैं कोई भी BCG ले लूं, उसके भी 6 केसेस हैं. सो दैट मीन्स every case, every selection of 3 people has 6 permutations of the same running, just because of the order matters, right? तो अगर ऑर्डर मैटर नहीं करेगा तो मुझे एक ही केस चाहिए ना, AGB. मुझे 6 केस नहीं चाहिए, और हर किसी में 6 केस आ रहे हैं. सो द वन केस ऑफ AGB is actually 6 times. Any second case you can take, case of ACG is one case, but that is coming 6 times. So all the cases, जितने भी cases हैं, 210 cases थे. So जो आपके अनऑर्डर्ड हैं, अनऑर्डर्ड केसेस, ओके, अगर मैं ऐड करूंगी तो 1+1 केस हो गया. सो टोटल नंबर ऑफ केसेस आ गया यहाँ पे, इनटू 6 is giving you 210 cases because every case is 6 times. So therefore, unordered number of cases would be equal to 210 upon 6. अब ये समझिए, ये 6 क्या है? ये 6 बेसिकली 3 फैक्टोरियल है, क्योंकि AGB को परम्यूट अगर मैं कर रही हूं तो हो क्या रहा है, 3 पोजीशंस हैं. इन द फर्स्ट पोजीशन AGB में से कोई भी एक आ सकता है, राइट? इन द सेकेंड पोजीशन नाउ यू आर ओनली लेफ्ट विथ 2. इन द थर्ड पोजीशन यू डोंट हैव एनी चॉइस, क्योंकि एक ही बचा होगा, वही आ जाएगा. सो 3 into 2 into 1 यानी कि 3 फैक्टोरियल परम्यूटेशंस है. ये जो 6 है, इट इज 3 फैक्टोरियल. सो अनऑर्डर्ड नंबर ऑफ केसेस, दैट मीन्स 7C3, क्योंकि C क्या है, अनऑर्डर्ड नंबर ऑफ केसेस, इज इक्वल टू 210. क्या था? 210 was the permutation, so it was 7P3 अपॉन 6, यानी कि 3 फैक्टोरियल. तो बेसिकली हमें क्या फॉर्मूला मिल रहा है यहां से, 7P3 क्या था, इट वॉज 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 3 फैक्टोरियल. अब नीचे डिनोमिनेटर में 3 फैक्टोरियल भी आ गया. सो अगर इसको आप जनरलाइज करोगे तो NC
k is equal to n factorial upon n minus k factorial, which was your permutation, but मुझे ऑर्डर्स नहीं चाहिए, तो इसको हम there's another word for it कि मैं हर केस को डीपर्म्यूट कर रही हूं. I don't want the permutations of every case, so I'm depermuting. तो यहां पर k factorial से I will have to divide again. Of course, there will be less number of cases. That is pretty clear. ये तो होंगे ही कम cases ना. You will have 210 upon 6. That means 35 cases only. On order तो 35 case है. अब 35 इसका मतलब समझिए कि ये A, G, B, A, C, G ऐसे करके अगर मैं अलग अलग केसेस लेती हूँ तो टोटल 35 केसेस बनेंगे आपके. बट अगर मैं उसकी ऑर्डरिंग लगाती हूं तो हर केस की ऑर्डरिंग कितनी है? 6 ऑर्डरिंग्स बन सकती हैं. दैट इज हाउ यू आर गेटिंग 210. एंड दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर नॉलेज. एनसीके, what is the relation between NCK and NPK? So NCK is NPK upon K factorial. आप डीपर्म्यूट कर रहे हो ना बेसिकली. और इसी तरीके से आप किसी भी परम्यूटेशन क्वेश्चन को कॉम्बिनेशन यूज करके कर सकते हैं. आप क्या करना है, अगर आपको परम्यूटेशन निकालना है यानी अरेंजमेंट निकालना है, यू फर्स्ट सिलेक्ट एंड देन वट एवर हैज बीन सिलेक्टेड परम्यूट दैट, तो आपको वो अरेंज भी हो जाएगा. ठीक है. थैंक यू वेरी मच. नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.